Good morning, Adit. Good morning, sir. So today we are going to do two topics. One is De-Broglie hypothesis and another is Heisenberg's uncertainty principle. Last class we completed hydrogen spectrum and Rydberg equation, right? Yes. Okay, so let us start. Now I hope you know this famous equation called Einstein's mass energy equivalence. E is equal to mc square. Yes, sir. Have you heard about it? Yes, sir. What does it say? That for a very small amount of mass, there is a huge untapped energy, because when you multiply mass with c square, which is a very huge conversion factor, right? मतलब बहुत छोटा मास से बहुत ज्यादा एनर्जी मिल सकता है. There is a famous Einstein's mass energy equivalence equation, right? अब तुम्हें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से फोटोन का एनर्जी भी पता है, E is equal to hc by lambda. Yes, sir. तो अगर इन दोनों को इक्वेट करें, if I equate this two for light or photon, so what will you get? If I equate this two, it will be mc square is equal to hc by lambda, as you can follow here. And what you are getting? Lambda is equal to h by mc. Do you agree? Yes. So in this case, I can say mc is the momentum of the photon. If c is the speed of the photon or speed of the light, m is the mass of photon, then mc should be the momentum of the photon. So here we are having an equation for photon, that lambda is equal to h by p, where p is the linear momentum, right? ठीक है ना? Is linear momentum and momentum the same thing? No, linear momentum and angular. There is another momentum called angular momentum. So that is why I am just mentioning linear momentum, because linear momentum mathematical expression is mv, right? Mass into velocity. Yes. That is what we are getting here. So lambda is equal to h by p. P is the linear momentum. Okay. Okay. So what did De-Broglie did? So you can see he extended this idea for a microscopic particle which is in motion. Right? Let's say there is a microscopic particle which is moving with a velocity v and जिसका mass is small m. तो अगर मैं इस इक्वेशन को स्ट्रेच करूं, तो नाउ इट विल बिकम फॉर दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या मिलेगा? लैम्डा इज इक्वल टू h by mv. So c will be replaced by v. Yes. So this is the De-Broglie equation, that lambda is equal to h by p for any microscopic particle of mass m which is moving with velocity v. Okay. Is it clear or not? Yes, sir. चलो, तो इक्वेशन तो मिल गया, De-Broglie equation, which is basically the extension of the equation which we have found for photon. Yes, sir. Okay, so let's say, what does it say? Louis De-Broglie made a bold analogy. If radiation shows particle behavior, radiation मतलब radiation का particle behavior मतलब photon, particle मतलब photon, Okay. then particles शुड एग्जिबिट वेव बिहेवियर. मतलब अगर वेव का पार्टिकल नेचर होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि कोई पार्टिकल का भी वेव नेचर हो सकता है. एंड दैट इज Yes, व्हाट sir. ही सेड विद दिस एक्सटेंशन. So let's say this is a microscopic particle which is moving with a velocity v. इस पार्टिकल का मास m है, and he said that there will be a wave character associated with this body, with this particle. So this is the wave character associated with it, and this wavelength will be called De-Broglie wavelength. And ये जो wave character associated है, that will be known as matter wave, or you can also call it De-Broglie wave. Is it clear? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, the term mv is equal to p in lambda is equal to h by mv is purely mechanical property. ठीक है, तो इस इक्वेशन का खासियत क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू h by mv में जो मोमेंटम होता है वो पार्टिकल कैरेक्टर शो करता है, राइट? दैट रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल कैरेक्टर. वेयर एज Yes, sir. जो वेवलेंथ है, दैट रिप्रेजेंट्स वेव कैरेक्टर. तो कैन आई से इन De-Broglie's equation both the characters are represented, particle character as well as wave character. Yes. So that means it represents the dual nature of particle. It Okay. represents the dual nature of particle, that is
particle nature itself as well as wave nature. Is it clear? Yes, sir. Okay, chalo. So what is matter wave? So a matter wave or de Broglie wave is not an electromagnetic wave. Electromagnetic wave में क्या होता है? There will be oscillation of two fields, electric field and magnetic field, जिसका direction of oscillation perpendicular होता है with respect to each other, right? Yes, sir. But this is nothing but a probability wave. Its amplitude at any point gives the probability of finding that particle at that location. It has no physical counterpart like electric or magnetic field oscillation. So matter wave is different from electromagnetic wave. Okay. So what it simply represents at any given point, at this point, let's say this is the microscopic particle and it started moving. At this point, the probability of finding this particle is basically the amplitude of the wave, right? At this point, the probability will be the amplitude of the wave. This is nothing but a probability wave, right? Yes, sir. I hope this point is clear. Yes, sir. Okay. So let us give the statement of De Broglie hypothesis, which says every moving material particle, microscopic or macroscopic, has a wave associated with. This wave is called matter wave or De Broglie wave, and its wavelength is given by this expression. So this is known as De Broglie equation. Okay. So it says no matter what is the particle nature, microscopic है और macroscopic है, there should be an wave character associated with it. ठीक है. अब ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में क्या डिफरेंस होता है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. तो उसके लिए व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, व्हाई de Broglie? So the question is why de Broglie wavelength is not significant for macroscopic objects. ठीक है, तो वही देखते हैं पहले. तो एग्जांपल, लेट अस टेक ए क्रिकेट बॉल. तो क्रिकेट बॉल का जो एक एक्सपेक्टेड मास होता है, दैट इज टेकन मास इज इक्वल टू 0.15 kg एंड लेट्स से द वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकंड. तो अगर मुझे इस क्रिकेट बॉल का de Broglie वेवलेंथ निकालना है, आई हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू h by mv. Yes. ओके. h का वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पता है, 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड. SI पे लिया गया है. Mass and velocity are also taken in SI units. Now if I do the calculation, or if you do the calculation, it is coming as 1.47 into 10 to the power minus 34 meter. तो 10 का पावर क्या है, माइनस 34. ठीक है, which is almost 10 to the power minus 19 times the diameter of an atomic nucleus. तो इसका मतलब क्या है, ये एटम से भी 10 to the power minus 19 times है. You can assume that how insignificant this wavelength is for this cricket ball. Do you get me or no? Yes. So this is completely unmeasurable and physically insignificant. So what does that mean? That means if you take any macroscopic object in motion, be it a cricket ball, be it a football, lift, car, whatever, उसका de Broglie wavelength तो होता है associated, but that is insignificant, right? So that will not disturb anything. Now what do we mean by disturbance? एक चीज देखो, जब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मोशन होता है तो यू कैलकुलेट वेलोसिटी, यू कैलकुलेट मोमेंटम, यू कैलकुलेट पोजीशन, एवरीथिंग बाय अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट? Yes. तुम सब कुछ प्रिसाइसली कर सकते हो. Whereas when it comes to microscopic particle, let's say इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, then we do not apply Newton's law of motion. क्यों पता है? No. क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये जो वेवलेंथ है और ये जो वेव एसोसिएटेड होता है इसके साथ, दैट इज सिग्निफिकेंट. एंड व्हेनेवर देयर इज अ वेव कैरेक्टर, देयर इज एन अनसर्टेनिटी. ठीक है, वेव का मतलब क्या होता है? तो लेट्स से दिस इज एन वेव. तो वेव मतलब अनसर्टेनिटी. दैट मीन्स यू कैन नॉट प्रिसाइसली लोकेट द पार्टिकल, रादर यू हैव टू से दिस इज द रेंज वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल is maximum. मतलब we are talking about probability, we are not talking about precision. Whenever there is a wave character associated, an uncertainty is associated. Uncertainty means you have to talk in probability, you cannot precisely locate the position of the particle. Is it clear? Yeah. And if you cannot do that,
You cannot apply Newton's law of motion. That is why macroscopic object in motion जिसमें तुम Newton's law of motion apply करते हो, microscopic में you cannot do that because of the wave character, or we can say significant wave character, right? Yes, sir. देख लेते हैं. तो लेट अस टेक एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास पता है एंड लेट अस टेक ए वेलोसिटी 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. तो इसको लेके अगर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे तो इट इज कमिंग अराउंड 7.27 into 10⁻⁻10 मीटर. सो इन दिस रेंज एंड यू कैन सी this is comparable to interatomic distance in crystal. So microscopic ये जो wavelength मिला है that is same as or in the similar range of atomic nucleus. That means it is measurable and physically significant, right? तो इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वेव कैरेक्टर De-Broglie wavelength significant है. That means there will be uncertainty and that means you cannot apply Newton's law of motion. Things will be different here. Is it clear or not? Yes, sir. Okay, so let us try to understand De-Broglie wavelength in different types of expression. मतलब De-Broglie wavelength को we'll try to express in different parameters. So first one already we know when we express in terms of momentum. So this is the first equation, lambda is equal to h by p or is equal to h by mv. That is the first expression where you express lambda or De-Broglie wavelength in terms of momentum. अगर मुझे De-Broglie wavelength को in terms of kinetic energy express करना है, वो जो moving microscopic particle उसका kinetic energy अगर उसके टर्म पे express करना है तो कैसे करेंगे? तो kinetic energy का expression क्या होता है? EK is equal to half mv square. Yes. तो यहाँ से what we have done, देखो ये if you can follow this, so if I rearrange all these things, so 2m EK is equal to m square v square. Simply I have rearranged, I have bring the denominator 2 to the left side, right? And also I have multiplied both sides with another m. Okay, so 2m EK will be m square v square, which is nothing but the p square, right? So what is the linear momentum? So p is equal to, can I say it, square root of 2m EK? Yes. Right, so I have expressed the linear momentum in terms of kinetic energy and simply replace the p by that. So this is the expression of De-Broglie wavelength in terms of kinetic energy. Okay? Okay. Any doubt so far? No, sir. Chalo. Okay. What is the third case? So let's say that there is a charged particle Q which is at rest initially and you have applied a potential difference of V volt on this particle from rest. So if you do that, what will happen? This particle will gain a kinetic energy which is equal to Q into V, that is charged into the potential difference applied on it. पता है ना? We have done this. So in this kind of questions जहाँ पे a charged particle will be accelerated from rest by applying a potential difference of V volt, I'll simply replace the kinetic energy by QV. So that is our third expression. ठीक है? Okay. I hope you understood कब use करना है. जब charged particle will be accelerated from rest by using the potential difference of V volt, then we are going to apply this. Okay, and fourth case is, in most of the cases you will find the charged particle is electron. तो electron का mass पता है, electron का charge constant है, H constant है, तो only voltage or potential difference is variable. So if you find that the particle is electron, you can put the values of the constant for electron and you can simply use this equation. So this is the shortcut. So De-Broglie wavelength of electron क्या होगा? That will be square root of 150 by the potential difference applied on the electron from rest. ये fourth equation, direct equation for electron. Is it clear? Is the voltage also under it? हाँ, the potential difference is also under the square root. Okay. ठीक है? So let us try some problems then. The first problem, what does it say? Calculate ratio of wavelength of alpha particle to proton if ratio of their kinetic energy is 1:4. तो कौन सा formula we are supposed to apply? First, second, third or fourth? From this we have to use the We second are supposed to apply the second one, the expression involving the kinetic energy. Yes, sir. Right? So let us do 49 here. So the expression we are supposed to is lambda is equal to what?
h by root over 2m ek. So you can see that h constant है, 2 constant है. So lambda is inversely proportional to square root of mass and inversely proportional to square root of kinetic energy. Yes. Okay. Now what is given in the problem? That if ratio of their kinetic energy alpha, so kinetic energy of alpha is to kinetic energy of proton, that is given, which is 1 by 4. Do you agree? Yes, sir. And we also know the mass of alpha by mass of proton. Do you know or not? Mass of alpha. एक अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है? 4 AMU और प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1 AMU. 1 AMU. तो सिंपली निकलना क्या है मुझे? We have to find out the ratio of wavelength of alpha is to proton. तो हमें क्या करना है? So can I say this is basically alpha का जो mass and kinetic energy है inverse है, तो वो कहाँ पे जाएगा? डिनोमिनेटर पे जाएगा. Denominator. Yes, sir. So I'll write mass of alpha into kinetic energy of alpha. न्यूमरेटर पे कौन जाएगा? Proton. This will be your formula. This is your final. Yes, तो क्या करेंगे हम? Mass of proton by mass of alpha क्या है? 4. 4. No, so 1 by 4. हाँ, mass of that is 1 by 4. Correct. This is 1 by 4. And ये एनर्जी का रिश्ता क्या है? 4. 4. So technically what is it coming? 1. Yes. So the answer is 1 is to 1. Okay. Got it. Okay. What about the question number 50? इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? What do you think? Calculate ratio of De-Broglie wavelength of alpha particle to proton when accelerated through same potential difference from rest. Third. तो ये थर्ड वाला करना है अप्लाई. Yes, sir. तो the formula which we are going to apply is lambda is equal to h 2m qv. Q is the charge of the particle, v is the potential difference applied. तो यहाँ पे h constant है, potential difference applied is also same. Yes. है ना? Yes, sir. So तो can I write lambda of alpha by lambda of proton? That must be. तो ये inversely proportional है mass and charge के साथ. So mass Yes, of sir. alpha and charge of alpha denominator पे आएगा. And for Yes, proton, it will go at numerator. Yes. Yes or no? Yes, sir. तो अब बता दो. मास ऑफ ये तो मुझे पता है ऑलरेडी. सो 1 by 4. और अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? 2 यूनिट. 2 and this is for right. So this is for proton. Proton के लिए 1 है. So this is 1 by 2. So 1 is to 2 root 2. Yes. आया समझ में? Yes, sir. चलो. Okay, next problem. What is the question here? It says an electron having initial kinetic energy of 6 electron volt. Okay. So this is an electron. It already have a kinetic energy. This is an electron. It has a kinetic energy of 6 electron volt. That is the initial kinetic energy. And on this electron you have applied a potential difference of 4 volt. तो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन जिसका काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस पे यू हैव अप्लाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट. राइट? Yes. तो क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज? देखो, लेट्स से एक चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट पे है, उसमें तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, तो इट शुड गेन ए काइनेटिक एनर्जी. राइट? ऑलरेडी एक काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, यू आर फर्दर अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर काइनेटिक एनर्जी शुड इंक्रीज, डिक्रीज और इट शुड रिमेन द सेम? Increase.
इट शुड इंक्रीज। ये पोटेंशियल Yeah. डिफरेंस अप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी गेन होगा इस इलेक्ट्रॉन को। कितना एनर्जी Hmm. गेन होगा? तो कहना इसे इट शुड बी E इंटू 4V, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्ज इंटू वोल्टेज। तो इतना Yes. एक्स्ट्रा ऐड होगा उसका काइनेटिक एनर्जी पे। तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी फिर क्या बन रहा है? दैट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 10 10. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। Yes. नाउ आई टोल्ड यू इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या था? लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 150 by the potential difference applied on the electron from rest, ये angstrom. But I can apply this formula only when the potential difference is applied on the electron from rest. यहाँ पे तो rest से नहीं हुआ है कि नहीं? Was the formula for rest or for initial kinetic energy? हाँ, but यहाँ पे तो rest से है. If this formula is applied on the electron, अगर the electron is at rest at the beginning, but यहाँ पे the electron is already having a kinetic energy initially, right? है ना? Yes. तो फिर Okay. क्या करना है? तो आई हैव टू फाइंड कि अगर इलेक्ट्रॉन जीरो से स्टार्ट करता है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है, तो आई हैव टू चेक अगर ये रेस्ट पे है एंड इफ दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो रेस्ट से ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी गेन करने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस यू हैव टू अप्लाई। इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी गेन करना है, सो उसके लिए कितना वोल्टेज यू हैव टू अप्लाई। So what do you do? So 10 electron volt is equal to electron into voltage that you have to find. Yes or no? Yes. So that is coming as 10 volt. Can I say that? Yes. I hope you understood, na? Yes. If we're taking E is equal to 1, then yes. Right. So ये kinetic energy का expression है, kinetic energy is equal to Q into V. तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे 10 वोल्ट अप्लाई करूंगा तो ये रेस्ट से इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन होगा। तो फिर इस फॉर्मूला में आई विल पुट V एज 10। 10. आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. चलो, what is our next topic? De-Broglie wavelength of electron in Bohr's orbit. तो तुम्हें क्या पता है अभी तक कि So what was the previous one for then? सॉरी The previous topic that we did for De-Broglie's wavelength, was that for any electron? that is for any moving electron, Okay. right? But the electron must start from rest. That is where you can apply this formula, right? Okay. ठीक है, चलो, let us start with the next topic, which is the De-Broglie wavelength of electron in Bohr's orbit. तो तुम्हें already पता है electron is a microscopic particle which is moving in Bohr's orbit under the influence of nucleus. तो Yes. electron in the atom in a Bohr's orbit we can consider as a moving microscopic particle. तो De-Broglie के हिसाब से उसका भी एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होगा, and there will be a De-Broglie wavelength associated with electron in Bohr's orbit. Correct or not? Yes. Yes, sir. Correct. तो let us take Bohr's orbit से हमें क्या पता कि this is the quantization of angular momentum. Do you remember mvr is equal to nh by 2 pi, where Yes, sir. mvr is the angular momentum, n is the integral multiplier. We have done Yes, this sir. before ना in Bohr's orbit. Yes, sure. Yes. तो एक काम करते, तो I hope you know that for the radius of Bohr orbit in nth orbit, it should be is equal to r naught into n square by z. R naught is equal to, or simply we call it a naught. A naught क्या होता है? 0.529 एंगस्ट्रॉम. ओके, ये हाइड्रोजन का फास्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस है, Yes. which is also known as Bohr's radius. Okay. Do you get me or not? हाइड्रोजन का फर्स्ट बोर ऑर्बिट का जो रेडियस, दैट इज नोन एज बोर्स रेडियस. ए नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका वैल्यू तुम्हें पता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, है ना? तो that means you know this r n z should be what? A naught into n square by z. Yes, sir.
So what I have replaced this Rn with this. Rn is equal to 0.529 into n square by z. Okay. तब यहाँ पे क्या होगा? 1n will be cancelled out. Yes. Right. अब ये can I bring the mvn to this side at denominator? तो क्या मिलेगा? h by mvn और ये 2 पाई कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर पे. Okay. तो ये h by mvn इसको मैं lambda n बोल सकता हूँ. दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ de-Broglie wavelength of electron at nth orbit. Then Yes or no? what happened to the atomic radius? Yeah, so I have replaced 0.529 by a naught. Okay. Right? 2 pi goes left side at numerator. So 2 pi, there will be 1 n left here because 1 n has been cancelled out. So from n square, 1 n will be left over here. So 2 pi n Yes. by z into a naught. So that is the expression of de-Broglie wavelength at nth Bohr orbit of an atom having atomic number is equal to z. Yes or no? समझ में आया? Yes. N represents the orbit shell, Orbit right? number. Okay. N represents the orbit number, na? Yes, sir. Okay. So can I say that de-Broglie wavelength of electron at nth orbit is proportional to n by z? So I can conclude that from this expression. Yes. Chalo. So can you solve question number 53? Okay. What does it say? The de-Broglie wavelength of electron in second orbit of lithium 2 plus ion will be equal to de-Broglie wavelength of electron in, there are 4 options given. So for which option the de-Broglie wavelength of electron will be same as this system? That is the question. What you are, तो क्या करना है तुम्हें? So N is equal to, in for the lithium ion, N is equal to 2 and Z is equal to 3. Z is equal to 3. So basically तुम्हें देखना है कि for which system, यहाँ पे क्या था expression? The N by lambda Z n is we have to. proportional to n by z. तो तुम्हें क्या देखना है कि for which system n by z value 2 by 3 मिलेगा. For the lithium system, n by z value is 2 by 3 and de-Broglie wavelength is proportional to this value. You have to check in which of these options n by z value is the same. Do you get Second me or not? option. Yes, sir. It should be second option, n is equal to 4 for C5 plus, z is equal to 6. Yes, sir. So this will be the answer. Yes, sir. Chalo, सही है. So I think we are at the end of de-Broglie hypothesis. तो last part क्या है? Quantization of angular momentum from de-Broglie hypothesis. We are trying to derive de-Broglie. I mean, we are trying to derive the quantization of angular momentum. That is mvr is equal to nh by 2 pi, starting from de-Broglie hypothesis. Do you get me? We are just trying to validate the postulate of Bohr. ठीक है? तो देखते हैं. Now as per de-Broglie, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड पे बोर्स ऑर्बिट पे घूम रहा है तो उसका एक वेव कैरेक्टर विल बी देयर एसोसिएटेड विद इट. इलेक्ट्रॉन का एक वेव कैरेक्टर होगा, एक de-Broglie वेवलेंथ होना चाहिए. यस और नो? Yes. सो लेट्स से दिस इज एन ऑर्बिट वेयर द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो de-Broglie के हाइपोथेसिस के हिसाब से लेट्स से दिस इज द वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड विद इट. ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ द स्टार्ट ड्रॉइंग द वेव. तो क्या करेंगे? सो लेट्स से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. तो यहां से वेव चालू हुआ, and you can see the wave ends at the same point. The starting point and end point of the wave, they are coinciding with each other. इसका मतलब क्या हुआ? इस ऑर्बिट पे एक वेव कंप्लीट हुआ, वेव फॉर्म हुआ, राइट? What does the red part represent? The red line, the red circle. Yeah, these lines, Yes. these are the wavelengths. Tangential. These are the wavelengths, na? And the orbit, that's the orbit. The circle is Right. the orbit. Yeah.
This is the Okay. orbit and this is the wavelength and this is the wave character associated with the electron. ठीक है. Now the point Yes. is this orbit will be a Bohr's orbit अगर ये wave complete होता है in this orbit. Wave completion का मतलब क्या है? If the starting point and end point of wave coincide with each other, तब जाके एक wave construct होता है. This is known as constructive interference. तो as per De-Broglie जिस orbit पे wave complete होगा, there will be constructive interference. उस orbit पे electron रह सकता है around the nucleus, right? That can be called a Bohr's orbit as per De-Broglie. Do you get me or not? So with this, what if it overlaps? Say, what if the start point and end point, it will overlap that? So then what will happen? Then this will happen. So they will never meet. If the starting point and end point does not overlap or does not come to a same point, what will happen? They will start cancelling out each other's phase. So basically the wave will not form here. This is destructive interference. तो ये wave destroy हो जाएगा. Do you get me or not? So this Yes, cannot sir. be a Bohr's orbit. जिसमें wave destroy हो जाएगा, it cannot be a Bohr's orbit because of destructive interference. क्योंकि it is not following De-Broglie hypothesis. उसमें कोई wave नहीं बन रहा है, right? Do you get me or not? Yes, sir. तो if this is the Bohr's orbit as per De-Broglie, तो इस orbit का radius अगर Rn है, तो what will be its circumference? 2 pi Rn. Yes. That is the distance traveled by the electron by complete revolution. And अगर in terms of wave देखोगे तो कितना distance travel हो रहा है? अगर n number of wave complete हो रहा है यहाँ पे, let's say then the distance traveled during the circumference is 2n into lambda n. ठीक है, ये lambda n time repeat हो रहा है, तो ये circumference में जितना distance travel हो रहा है by the electron, that is the same distance traveled by the wave, which is n into lambda n. Is it clear or not? Yes, sir. ठीक है. अब लैम्डा एन को तुम De-Broglie इक्वेशन के हिसाब से h by mv से रिप्लेस करो. I have replaced lambda n with h by m and vn, right? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां से देखो, you are getting this using this. तो Okay, we De-Broglie also take 2 pi हाइपोथेसिस to से, the other side. तो De-Broglie Okay. हाइपोथेसिस से you can derive the quantization of angular momentum. Okay? Okay, got यहाँ it. पे n क्या है? In this formula, that 2 pi Rn is equal to n lambda. ठीक है, इसमें n क्या है? n is basically the orbit number. जो orbit Got number it. होगा उतना ही waves बनेगा, right? Yes. यहाँ पे लिखा हुआ है nth Bohr orbit में n number of waves are completed. ठीक है, Yes, sir. चलो. So that is where we end De-Broglie hypothesis. Our next topic is Heisenberg's uncertainty principle. चलो देखते हैं. तो what we are actually dealing in Heisenberg's uncertainty principle. So what is the context of Heisenberg's uncertainty principle? देखो, in classical mechanics the position and momentum of any object can in principle be measured simultaneously with arbitrary precision. So we already do. We apply Newton's law of motion and उसके जरिए you can find the position and momentum of any moving object. It can be a lift, it can be a car, ball, whatever, precisely and simultaneously by applying Newton's law of motion, right? Yes. Yes or no? But when it comes to microscopic particle, it cannot be done. So classical physics said कि ये नहीं हो रहा है फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए तुम साइमल्टेनियसली पोजीशन मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते हो विद प्रिसीजन बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन. ठीक है ना, क्योंकि वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिससे हम वो कर सकते हैं, right? That is as per the classical physics or classical mechanics. But Heisenberg showed, or he shattered this classical notion by showing that this limitation is not instrumental, it is fundamental to nature itself. ये instrument का problem नहीं है.
This is the Oh, limitation, or this is by default, by nature, by design, this should be the case. समझ में आया कि okay. नहीं? Yes, sir. फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये दोनों तुम साइमल्टेनियसली विथ इक्वल डिग्री ऑफ प्रिसिशन मेजर नहीं कर सकते, and that Hmm. is by design itself, by design of science itself, by design of nature itself, right? It is not because of the instrumental limitation. Okay. So let's say Hmm. this is a macroscopic object, a ball which is moving with some velocity, तो इसका तुम position and momentum exactly measure कर सकते हो, both determinable. But when it comes to a microscopic particle like electron, proton, whatever, so for a moving microscopic particle you cannot do that. यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा पी, अच्छा लॉजिक क्या है, क्योंकि फॉर ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल देर इज सिग्निफिकेंट वेव कैरेक्टर, सिग्निफिकेंट वेव लेंथ, एंड जब वेव कैरेक्टर आ जाता है दैट मीन्स अनसर्टेनिटी इज एसोसिएटेड विद इट. Yes. अगर अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड हो जाता है दैट मीन्स यू कैन नॉट मेजर दिस थिंग्स विद प्रिसिशन. वी आर Hmm. डीलिंग विद प्रोबेबिलिटी. यस और नो? Yes. चलो तो देखते हैं. So let's say we want to locate an electron. We want to measure the position and momentum of an electron precisely. ठीक है. तो टू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन वी मस्ट इल्यूमिनेट इट विथ ए फोटोन. तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है, तो आई हैव टू स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन बाय ए फोटोन. ठीक है. इफ आई Okay. कैन स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन बाय ए फोटोन तो मुझे उसका पोजीशन पता चलेगा फ्रॉम द इल्यूमिनेशन. डू यू गेट मी ऑन नॉट? Yes. Right, so electron is located by a photon, but the problem here is फोटोन का एक एनर्जी होता है, फोटोन का एक मोमेंटम होता है, राइट? Hmm. व्हेन द फोटोन विल स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन तो इसका एनर्जी मोमेंटम इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इटसेल्फ डिस्टर्ब्स द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो तुम दोनों को एक साथ नहीं कर पा रहे. यस और नो? Hmm. Yes. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन बाय ए प्रोटॉन, बाय ए फोटोन, तो फोटोन का जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा एंड यू कैन नॉट मेजर द मोमेंटम विद प्रिसिशन. यस और नो? Hmm. तो तुम क्या कर सकते हो? तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यू कैन, व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट वी हैव ट्राइड यूजिंग वेरी शॉर्ट वेवलेंथ. जो फोटोन का वेवलेंथ है वेरी शॉर्ट, तो लेट्स से ऐसे वेवलेंथ तुम यूज कर रहे हो. तो ये इसका मतलब क्या है? इसका Was this मतलब है done बहुत experimentally? दैट, सॉरी, Was this done experimentally? हाँ दिस इज एक्सपेरिमेंटल. इफ यू आर यूजिंग वेरी शॉर्ट वेवलेंथ जैसे कि ऐसे, तो इसमें क्या है, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल Yes. डिस्टेंस पे. ये Hmm. वेवलेंथ के अंदर इलेक्ट्रॉन लोकेट होगा ना किसी वेवलेंथ के अंदर. इफ द वेवलेंथ Hmm. इटसेल्फ इज वेरी शॉर्ट दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन प्रिसाइसली. तो ये प्रिसाइज पोजीशन हो सकता है उसमें, बट द पॉइंट इज अगर वेवलेंथ शॉर्ट है तो एनर्जी ऑफ फोटोन हाई होगा बहुत, और Hmm. मोमेंटम भी हाई होगा. Yes, यस और inversely. नो? सो इन दैट केस लार्ज डेल्टा पी. अच्छा यहाँ पे डेल्टा का मतलब डिफरेंस नहीं है. नॉर्मली इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस इन अ पैरामीटर, राइट? कोई डिफरेंस मेजरमेंट. बट यहाँ पे Hmm. डेल्टा मतलब अनसर्टेनिटी. डेल्टा पी मतलब क्या है? डेल्टा का ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनसर्टेनिटी, नॉट Okay. डिफरेंस. ठीक है. तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन प्रिसाइसली लोकेट करने के लिए इफ यू आर यूजिंग ए फोटोन ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगा? फोटोन का मोमेंटम एंड एनर्जी विल बी वेरी हाई. तो फिर इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है उसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी. यस और नो? Hmm. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए व्हाट यू हैव डन, यू हैव टेकन अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ. दैट मींस लाइक दैट. तो इसमें एनर्जी ऑफ फोटोन तो कम होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी वेरी लेस, बट इसमें क्या होगा? नाउ द डेल्टा एक्स will be very high. Delta x means the uncertainty in position. Hmm. Yes or no? Yes, sir. So what does that mean? If you are trying to
do the measurement of one parameter precisely, other becomes highly uncertain. Yes. Okay. So you can only do one accurately, not the other. If you accurately measure one, the uncertainty in other will be almost infinite. Okay. So here is a statement of Heisenberg's uncertainty principle, which says it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of a microscopic moving particle with absolute accuracy or certainty. Is it clear? तुम Yes. और क्या तरीके से बोल सकते हो? You can also say that the more precisely the position of a particle is determined, the less precisely its momentum can be known, and vice versa. देखो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. चलो, so let us come to the mathematical expression of Heisenberg uncertainty principle. What is the mathematical expression? यहाँ पे देखो, this is the mathematical expression of Heisenberg's uncertainty principle. Delta x dot delta p greater than is equal to h by 4 pi. तो डेल्टा एक्स क्या है? दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन डिटरमिनिंग पोजीशन. डेल्टा पी क्या है? दैट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन डिटरमिनिंग मोमेंटम. एज आई सेड, यहाँ पे डेल्टा का मतलब अनसर्टेनिटी है, नॉट डिफरेंस. इज इट क्लियर? Yes. तो ये पोजीशन मोमेंटम का जो यूनिट होता है, दैट विल बी द यूनिट ऑफ दिस अनसर्टेनिटीज, राइट? यहाँ से तुम्हें क्या पता चलता है? डेल्टा एक्स से हाउ प्रिसाइसली वी नो वेयर द पार्टिकल इज. डेल्टा पी से क्या पता चलता है? हाउ प्रिसाइसली वी नो द पार्टिकल्स मोमेंटम. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे देखो, दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई और एच काट बाई 2. यहाँ पे एच के ऊपर एक काट साइन है, लाइक दैट. दिस इज कॉल्ड एच काट. h by 4 pi के जगह you can also write h cut by 2, जहाँ पे h cut is defined as h by 2 pi. Is it clear? What is the Normally significance यही of H रहेगा, cut? but in some cases अगर h cut use होता है then you should know this. What is the significance of H cut? Nothing. We are just representing in a different way. Okay. And is there a reason why it's H by 4 pi specifically? इसका mathematical derivation we don't have that scope of understanding. Okay. Okay? चलो, सही Yes. है. तो बट व्हेन विल डू द कैलकुलेशन, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे, विल अवॉइड द ग्रेटर देन साइन. सिंपली विल टेक डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई. ठीक है. Equal to or approximately? अप्रोक्सीमेट मतलब तुम्हें इक्वल टू पकड़ के करना है, बॉर्डर लाइन पकड़ के करना है, राइट? व्हेन यू आर Okay. एक्चुअली सॉल्विंग ए प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली डिटरमाइंड. ये तुम मैथमेटिकली कैसे डिसाइड करोगे? ठीक है. तो यहाँ पे देखो, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट कैन आई से? डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई. ये डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर पे आ रहा है, और अगर तुम डेल एक्स का एक्सप्रेशन चाहते हो तो डेल्टा पी डिनोमिनेटर पे आएगा, राइट? Yes. तो यहाँ पे लेट्स से इफ द पोजीशन इज एग्जैक्टली नोन, तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी 0. Yes. इफ यू एग्जैक्टली नो द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी 0. So if I Yes. take uncertainty in position as 0 at the denominator, you can see that delta p becomes infinite. That means uncertainty in momentum will become infinite. Is it clear? Yes. That means the particle could be anywhere in momentum space. ये कहीं भी हो सकता है. Completely unknown speed and direction. Is it clear? Yes. एंड सेम फॉर, अगर तुम्हें मोमेंटम एग्जैक्टली पता है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज 0. तो अगर तुम यहाँ पे 0 प्लेस करोगे तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इनफाइनाइट. दैट मींस द पोजीशन बिकम्स कंप्लीटली इनडिटरमिनेट. आई होप यू अंडरस्टूड मैथमेटिकली. Yes. एंड इफ आई से कि इफ वी वांट टू measure both of them with equal degree of uncertainty, I don't want both of them to be precise. I just want that दोनों को इक्वल अनसर्टेन से डिटरमाइन करें, राइट? दैट मींस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी हो जाए.
तो अगर उसके हिसाब से मुझे कैलकुलेट करना है तो फिर क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इट विल कम एज स्क्वायर रूट ऑफ h by 4 pi. ओके, Just a second. Could you please repeat the last one? I am saying if you want to measure both the parameters with equal uncertainty, मतलब अगर डेल्टा x is equal to डेल्टा p इस हिसाब से तुम मेजर करना चाहते हो तो दोनों दोनों में अनसर्टेनिटी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ h by 4 pi. Is it clear? 1 second, I'll just calculate it. Delta x delta p I can assume is equal to h by 4 pi as per Heisenberg. I am just equating it instead of taking greater than sign. तो अगर ये दोनों सेम हो जाता है तो आई कैन राइट डेल्टा एक्स स्क्वायर और डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई. तो यहाँ से Yes. आ रहा है ना, यहाँ से डेल्टा एक्स इज Yes, इक्वल sir. टू डेल्टा पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच बाई 4 पाई मिलेगा. Yes, sir. आई होप यू अंडरस्टूड. Yes, sir. अब एक चीज देखो, so let's say an electron is found at a distance of 5 angstrom from a nucleus. Nucleus से electron has been found at a distance of 5 angstrom. So can you tell me what is delta x uncertainty in position here? 5 angstrom away. So uh, that angstrom represents. Look, 5 is a finite value. That means we have located the electron precisely. So फिर delta x will be 0, uncertainty in position will be 0, isn't it? Okay. है ना? Now if I Yes. even change the question that let's say the electron is found at 0 angstrom distance from nucleus, तो इसमें delta x क्या होगा? If delta. So 0 is also a finite value, right? 0 is also a defined value. तो इसका मतलब क्या हुआ? That electron has been located precisely. तो डेल्टा एक्स फिर से 0 हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फिर से 0 हो जाएगा. और अगर डेल्टा एक्स 0 हो जाता है तो डेल पी इनफाइनाइट हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी इनफाइनाइट. क्लियर? Yes, sir. चलो, तो लेट अस ट्राई टू एक्सप्रेस हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. अब एक चीज बताओ, तुम्हें इलेक्ट्रॉन और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मास एग्जैक्टली पता होता है? ये सुनो, इलेक्ट्रॉन का मास एग्जैक्टली नोन है, राइट? Yes, sir. तो मोमेंटम पे जो अनसर्टेनिटी वो किसके लिए आएगा? मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, बट मास इज एग्जैक्टली नोन. तो मोमेंटम का जो अनसर्टेनिटी दैट विल बी बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. Yes. तो कैन आई राइट डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इनटू डेल्टा वी? Yes. तो अगर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को रीअरेंज करें इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इट विल बिकम दिस डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू h by 4 pi. इज इट क्लियर? Yes, sir. So this is your another working formula. अगर हाइजेनबर्ग के इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स करना है तो these two are your working formulas. I hope it is clear to you. Now let us do this problem. What does it say? A microscope using suitable photon, as you know that electron is located by photon, right? A microscope using suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. So what is the uncertainty involved in measuring velocity? तो यहाँ पे what is given and what you have to find out? क्या दिया हुआ है? Within a distance of 0.1 angstrom. इसका मतलब क्या है? कौन सा पैरामीटर is given? Distance is given, so we can calculate the velocity from that. No, you have to find delta V. Right? That okay, is you have to find. X uncertainty in position. Okay. Right. Yes. So delta X is given to you. That is 0.1 angstrom. Right? 0.1 angstrom. कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? We can use delta X into delta V. ये वाला करेंगे. Yes, अब sir. इलेक्ट्रॉन का मास पता है? Yes, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, राइट? सो m इज नोन, h इज नोन, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पता है, वो जूल में, जूल सेकंड पे होता है SI यूनिट पे. तो इलेक्ट्रॉन का मास किस पे लेना है? ये kg पे लेना है, h जूल सेकंड पे. सो ऑल ऑफ देम आर इन SI यूनिट्स.
तो फिर Yes, डेल्टा sir. एक्स कौन सा यूनिट पे लेना है? SI unit. एसआई पे, मतलब ये भी मीटर पे लेना है। मुझे एंगस्ट्रॉम से मीटर पे कन्वर्ट करना होगा। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस कन्वर्शन फैक्टर्स, राइट? Okay. तो डेल्टा भी निकल जाएगा। Yes, sir. कौन सा यूनिट पे आएगा? एसआई पे, Since मीटर पर सेकेंड। hmm, I hope it is clear. So I'll leave the calculation part to you. Let us do 55. A golf ball has a mass of 45 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within accuracy of 2%, calculate uncertainty in position. तो इस पे what are the parameters given to you? Mass दिया हुआ है 45 ग्राम, velocity or speed is given 45 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया हुआ है? percentage Hmm. for speed, the accuracy of speed. So delta v is given, which is 2% of velocity. Yes, तो sir. डेल्टा v क्या होगा? 45 का 2%। Hmm. यस और नो? Yes, sir. निकालना क्या है? डेल्टा x निकालना है। हो जाएगा। सब But कुछ एसआई पे लेना है। ऑल द पैरामीटर्स मस्ट बी टेकन इन एसआई। तो ये जो मास लेना है ये केजी पे लेना है। what एंड are देन we यू supposed to कैन, do with the percentage? Why did we do that part? हाँ, तो डेल्टा भी निकालना होगा ना। इट इज एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो जो वेलोसिटी इज गिवन 45 मीटर पर सेकेंड, उसका 2% इज द अनसर्टेनिटी। So is delta V accuracy or uncertainty? I mean, the range is always the uncertainty. ठीक है ना? Yes. So I hope rest you can do the calculation part. Hmm. Chalo. Can you do this? The question is, if the uncertainty in position and uncertainty in momentum are same for a microscopic particle in a motion, delta x is equal to अगर delta p होता है तो delta v का expression क्या होगा out of these four options? What will be the expression of delta v? We did this question, root over h by 4 pi m. कैसे होगा? कैसे मिलेगा? So you have this expression that delta x into delta p is equal to h by 4 pi. 4 pi. And delta p can be written as m into delta v. So can I write this is delta p square? Del x is equal to del p है ना, तो दोनों को del p पकड़ लेते हैं, and del p is equal to m square delta v square. Yes. Yes or no? Yes, sir. तो यहाँ से तुम delta v निकाल सकते हो. Delta v is equal to what should I write? Square root of h by 4 pi, और यहाँ पे 1 by m square का square root लोगे तो ये 1 by m हो जाएगा. So the answer should be option B. Is it clear? Yes, sir. चलो. Now let us try to understand some terminology. For example, what is conjugate parameters? I hope you don't know this or you have not heard about this. Conjugate parameters क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखो, ये जो position and momentum, ये जो दो पैरामीटर है, they are forming the equation of Heisenberg's uncertainty principle. तो कोई भी two parameters which can satisfy the equation of Heisenberg's uncertainty principle can be called conjugate parameters. जैसे कि position and momentum are two conjugate parameters, so they can form Heisenberg's uncertainty principle का equation. ठीक है? तो two physical quantities are called conjugate parameters if they satisfy an uncertainty relation analogous to Heisenberg's uncertainty principle. That is, the product of their uncertainties is bounded below by a quantity involving Planck's constant h. तो अगर a and b, if these are the two parameters, conjugate parameters, तो they will form an equation like this: delta a delta b greater than is equal to h by 4 pi. Is it clear?
अगर What ये is इक्वेशन analogous? सेटिस्फाई होता है इन दोनों पैरामीटर्स से, देन दे कैन बी कॉल्ड कंजुगेट पैरामीटर्स ऑफ ईच अदर। देखो What is analogous? एनालॉगस मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जैसा, सिमिलर। Okay. इज इट क्लियर? नाउ आई Yes, हैव अ sir. क्वेश्चन। सो कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट्स ऑफ कंजुगेट पैरामीटर्स टू Uh, सेटिस्फाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? ये ए एंड बी का जो यूनिट है, इन दोनों यूनिट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए टू बी ए कंजुगेट पैरामीटर? the product. हम्म? Are you asking about delta x ए into एंड बी, delta? ए एंड बी, लेट्स से ए एंड बी आर टू कंजुगेट पैरामीटर्स, तो इन दोनों का जो यूनिट है, ये यूनिट्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए टू सेटिस्फाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? तो कहना इसे राइट साइड पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, Hmm. दिख रहा है ना, राइट साइड पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो कहना इसे ए एंड बी का जो यूनिट्स है, इन दोनों यूनिट्स का प्रोडक्ट शुड बी सेम एज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। Yes. चलो, that is what we are going to do here. So for two quantities A and B to be conjugate, their product of units or dimensions must be equal the dimensions of Planck's constant h. The unit of A into unit of B क्या होना चाहिए? That should be unit of Planck's constant, which is Joule second, right? Yes, sir. और इन दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? That should be the same dimension as Planck's constant, which is this. तो आई होप समझ में आ गया होगा। Yes, sir. So can you tell me another two conjugate parameters like position and momentum which can form Heisenberg's uncertainty principle? The simple example should be energy and time. Energy का यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। सो इन दोनों का जो यूनिट है वो जूल सेकेंड में आएगा, सेम एज प्लैंक्स कांस्टेंट। सो दे कैन आल्सो फॉर्म Heisenberg's uncertainty principle. Yes or no? Yes. So if I express Heisenberg's uncertainty principle in terms of energy and time, क्या मिलेगा? डेल्टा E into delta T is greater than is equal to h by 4 pi. Is it clear? Yes, sir. अब ये एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? लेट्स से एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h into फ्रीक्वेंसी, राइट? प्लैंक्स कांस्टेंट into फ्रीक्वेंसी। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू तो एग्जैक्टली पता है, तो ये Hmm. एनर्जी में अनसर्टेनिटी आएगा बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी। Yes or Yes. no? Yes. तो फिर आई विल रिप्लेस डेल्टा ई विद h into डेल्टा न्यू, और यहाँ से देखो तुम h विल बी कैंसल्ड आउट and this is your expression in terms of frequency and time. Clear? Yes. चलो सही है। So here we have a question to solve. What is the question? The position of a proton is known to an accuracy of 0.01 nanometer. मतलब delta x is given 0.01 nanometer, but usually Heisenberg's uncertainty principle पे we use SI units, तो मैं इसको directly मीटर पे कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है? Calculate the minimum uncertainty in its momentum and kinetic energy. तो डेल्टा P निकालना है and uncertainty in kinetic energy निकालना है, that is डेल्टा EK भी निकालना है। These are the two questions. Now how do I do this? कैसे करना है? तो तुम्हें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो पता है, Yes, sir. which is equal to h by 4 pi. तो यहाँ पे डेल एक्स पता है, h पता है, 4 पाई सब कुछ पता है, डेल पी तो मिल जाएगा, राइट? Hmm. Yes, sir. So you can easily find delta p, uncertainty in momentum. Yes, sir. करना क्या है मुझे? अच्छा, मास ऑफ फोटोन इज गिवन टू यू, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर, राइट? Yes. तो मुझे क्या करना है? I have to express uncertainty in kinetic energy in terms of uncertainty in momentum. ये दोनों कनेक्टेड है, तो अगर मैं Yes. कनेक्ट कर पाऊंगा देन आई कैन रिप्लेस इन दिस इक्वेशन।
राइट? तो 2m ek is equal to m square v square. Do you know or not? Yes. Which is basically p square. So can I say that 2m delta of ek should be is equal to delta p square? Yes. So this is the relation between uncertainty in momentum and uncertainty in kinetic energy. Now you can use this relation here to find uncertainty in kinetic energy. देखो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. So I'll leave this part to you. I am not doing the complete part. Rest of the calculation, I hope you can manage. Okay. So we are also done with Heisenberg's uncertainty principle. Just let us complete the last part, which is the limitations of Bohr's atomic model. Okay, we are doing it here because ये Bohr's का जो atomic model उसका limitations are connected to these theories, De-Broglie and Heisenberg. ठीक है? Yes. तो देखते हैं what is happening. First of all, the पहला limitation जो है Bohr's model, Bohr's atomic model is only applicable to one electron system, right? This already you know. It can be only Yes. applied to one electron system like hydrogen, helium plus, lithium 2 plus, beryllium 3 plus, boron 4 plus. In all this system, multi-electronic system पे you cannot apply. For multi-electronic system, you cannot apply Bohr's model of atom. Is it clear? Yes, sir. ठीक है, चलो. Let us look at the second limitation. अब तुम्हें हाइड्रोजन, यू हैव लर्नड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो तुम्हें पता है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे एक एक लाइन रिकॉर्ड होता है अगेंस्ट द वेवलेंथ्स. Yes. ठीक है, तो आई कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए लैम्डा इज एग्जैक्टली नोन वेवलेंथ. अगर लैम्डा एग्जैक्टली नोन होता है यूजिंग De-Broglie's equation, I can say the p can be exactly known as well using lambda is equal to h by p. Yes or no? De-Broglie or uncertainty principle? De-Broglie's hypothesis, lambda is equal to h by p. I can use this to determine momentum from lambda. So अगर ये momentum exactly known है, इसका मतलब uncertainty in momentum is zero. Yes, sir. Now I am applying Heisenberg. अगर uncertainty in momentum zero होता है, that means what? That means uncertainty in position should be infinite. Yes. So can I say as per DBH, that is De-Broglie's hypothesis and Heisenberg's uncertainty principle, position of electron cannot be determined inside the atom? Position of electron. Yes. As per Because- De-Broglie and Heisenberg, that is what we are getting into. Yes, sir. Your voice is coming on the lower side, okay? Am I audible now? Yes, better. But you see that Bohr's model of atom pe we have exactly calculated the radius of the orbit, which is nothing but the distance of electron from the nucleus, right? Yes. इसका मतलब क्या हुआ? Bohr's model of atom is inconsistent with De-Broglie hypothesis and Heisenberg's uncertainty principle. Is it clear? Oh, yes. That is the major limitations. So you can see there are more. So nature of electron, one is this. As per Bohr's assumption, electron is particle only. But as per De-Broglie Heisenberg or quantum reality, electron has a dual nature, wave nature as well as particle nature. As per Bohr's model, electron का path fixed है, fixed circular orbits. But as per De-Broglie or Heisenberg, you cannot locate the electron precisely. मतलब इसका path is not defined. It exists as probability cloud. We'll come to that later in quantum mechanical model. बोर्न ने इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों साइमल्टेनियसली मेजर कर लिया था, which is not possible as per quantum reality. Bohr's model cannot be applicable on multi-electronic system, right? And also, Yes. you see, अगर तुम you remember that hydrogen का line spectrum जो है, if you apply an external magnetic field on that line spectrum,
what will happen, वो स्पेक्ट्रम में जितना लाइन्स है उसका हाइपर फाइन स्प्लिटिंग हो जाएगा. मतलब अगर ये एक लाइन है हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम में, तो इसका हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होगा. दिस लाइन विल स्प्लिट इनटू ऐसे लाइन स्पेक्ट in presence of external magnetic field or electric field. Okay, Okay. so in spectrum of hydrogen atom, the spectral lines undergo hyperfine splitting under the influence of external electric field or magnetic field. जब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस पे ये इंसिडेंट होता है, दैट इज द हाइपरफाइन स्प्लिटिंग ऑफ द लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देन इट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट. अगर ये सेम चीज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, देन इट विल बी कॉल्ड जीमैन इफेक्ट. आई होप यू So अंडरस्टूड. Stike effect is in presence of magnetic and Zeeman इलेक्ट्रिक effect फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस पे जब ये हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होता है हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम पे, and it is called Stark effect. अगर सेम चीज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस पे होता है, then it will be called Zeeman effect, right? is. Yes, sir. And none of them can be explained by force model of atom. So I'll finish it here. We have completed De-Broglie and Heisenberg as well. The next class we are going to start with quantum mechanical model. First I'll try to explain a little bit of Schrodinger's wave equation, wave function क्या होता है, all these things, and then we'll move to the quantum numbers, right? Okay, sir.